Ladies and gentlemen, crores of Indians are waiting for 5th of August because that's the day the Ram Mandir's Bhumi Pujan will be done in a historic and grand manner, finally satisfying the astha of all Hindus who have been yearning to see Lord Ram be placed in his rightful home, and after 500 long years, this will become a reality. But while hectic preparations are underway for this big event in Ayodhya and across the country, which will be telecast on the national broadcaster Doordarshan, the opposition, once again mocking the faith of the Hindu community, have come out to oppose various aspects of this auspicious occasion. Today, CPI Member of Parliament Binoy Viswam shot off a letter to the central government, to the INB minister, claiming that the live broadcast of this event should be blacked out. It's not proper since it will apparently compromise the secular image of our country. That's right. He wants the Bhumi Pujan not to be broadcast at all. Now, ladies and gentlemen, this is only the latest in a string of comments that various opposition leaders have made. While the Samajwadi Party questions the timing of the puja, Shiv Sena wants a virtual Bhumi Pujan, and the Congress went so far as even to mock the list of invitees. In fact, the NCP, which claimed that the government's priorities are warped, their leaders have now requested for relaxations of Bakrid celebrations. Look at the irony and listen in to some of the reasons these opposition leaders gave. Publish that news in the bulletins of the national broadcaster. A live broadcast is something else. That means India is being attempted to make a country which is no more a secular nation. गंभीर परिस्थिति है कि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने भी इसको प्राधान्य देने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण तो उसमें कोई जल्दी नहीं है। ये चीफ जस्टिस को इस समारोह में निमंत्रण देना जरूरी है। ये लोग सिर्फ राजनीति करके जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। मंदिर बनना चाहिए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं है, मंदिर तो परमिशन हो चुका है, लेकिन ये 5 अगस्त को करके ये लोग जो हैं इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट लेकर के जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। Well, on my case, ladies and gentlemen, I'm going to completely expose this lobby which claims that this is some kind of subtle discrimination and that the live telecast of the Bhumi Pujan at Ayodhya would be communal. Times Now has accessed a 2002 notification of the INB ministry under the then Atal Bihari Vajpayee government, who had then broadcast a 5-minute bulletin specially for Hajj pilgrims, and this was done during the time when the Muslims go for their Hajj pilgrimage. For those who don't go, this 5-minute bulletin was dedicated to them. The left NCP, Samajwadi Party, AIMIM, they did not seem to have any objections to this telecast then. In fact, the national broadcaster has over the years aired several religious occasions and visits live, covering the diverse culture of our country multiple times. In 1999, the visit of Pope John Paul II to India was telecast live. In 2014, the Bodhisattva festival held in the national capital was broadcast live as well. In 2016, Doordarshan covered the canonization of Mother Teresa, and in 2018, the opening ceremony of the Kartarpur corridor was also live streamed. Just last year, the Abhishek of the Jain images, which was held, Mastaka Abhisheka, on a large scale, was also covered by Doordarshan, the national broadcaster. So, ladies and gentlemen, what are these political parties which are virtually a lobby that think secularism is only equal to bashing down the Hindu astha? That, ladies and gentlemen, seems to be the only objective they have. So the legitimate question on the news are tonight: Hajj broadcast secular, Bhumi Pujan telecast communal? Is that different strokes for different folks by this lobby? That's the question and the debate. Ram Bhumi Pujan blockade, that's the hashtag and the debate on the other side. You're watching the News Hour at 9, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. And joining
Joining me tonight, Shehzad Poonawalla, lawyer Vinod Bansal, national spokesperson of the Vishwa Hindu Parishad, MC Akbar's political analyst, Shadab Chauhan, national spokesperson of the Peace Party, Tehseen Poonawalla, political analyst. But tonight on the standpoint, it will be Dr. Sambit Patra, national spokesperson of the BJP, who will take on Dr. Dinesh Washne, leader of the CPI, and Dr. Dinesh Washne. My first question to you is, why will the telecast of the Bhumi Pujan destroy the national integrity, and why will it destroy the secular fabric in this country if Pope John Paul's visit, if the Christmas telecast that happens every year on the 24th of December, if the Bodhisattva celebrations are telecast, the Jain celebrations take place, Kartarpur takes place, why does only the Bhumi Pujan destroy the secular image of India? And 90 seconds is all you have. 90 seconds. Okay, now, thank you, Navika. Look, as far as Ram Janmabhoomi Puja is concerned, one should not forget the fact that how this puja has come. It is a fact that in 1998, the BJP and RRS demolished historical mosque here. So it was a criminal offense, and still the witnesses are going on in the court. You know, Murli Manohar Joshi and Advani ji has to give a statement in the court. Number two, what Comrade Binoy Vishwam, our member of parliament, has said, I fully support that on 3 counts, which he also said the same. Number one, the Prasar Bharati Act do not allow us to telecast anything which is communalized in nature. And whatever RSS and BJP has done in the Ayodhya is a communalization of the Indian masses and the thought process of the Indian people instead of developing the scientific temperament. Number two, the government of India, Prasar Bharati, is an autonomous body funded by the state exchequer, funded by the people's money. It cannot be one-sided. Making a short report on event is a different thing. Live telecast is a different thing. And that too, a disputed event, yet the Supreme Court has decided that the land will be given to Ram Janmabhoomi, but yet the Supreme Court has said that what has happened to that case where the mosque was demolished, which was a criminal offense, which was a criminal act. Number three, what about the priority? The priority is we have 15 lakh cases of COVID. The highest percentage the COVID surge is there in India and the world nowadays, around 20%. And unemployment. Why Modi ji is not coming from unemployment? Well, your 90 seconds are up. You know, in terms of the number of reasons, you'll have a list, which will be probably as long from Kashmir to Kanyakumari. But Dr. Sambit Patra, they say secular fabric of the country will be destroyed because the autonomous broadcaster now wants to broadcast a Hindu ceremony for so long. Because if it was a small report, it was fine. May I ask them that Hajj that is done, telecast, also Christmas celebrations which are telecast over, couple of hours, that's all right. That's secular. But Hindu Bhumi Pujan, Ram Mandir Bhumi Pujan, that is communal. Respond to it. See, Navika, first and foremost, I have a complaint with you as well. The hashtag should have been more interesting today. The hashtag should have been Kahin Pujan, Kahin Sujan. Kahin Pujan or Kahin Dil mein, Dimag mein Sujan. Kahin Pujan, Kahin Sujan. Kahin Deep Jale, Kahin Dil Jale. So as far as these diljales are concerned, let me confess tonight, Navika, I am here not to debate tonight. I am here to enjoy and smell these diljales. जब इनका दिल जलेगा ना, तो मैं सूंघूंगा और आनंद. I derive some sadistic pleasure. These people, how dare this man come over here in this television and say that this is a disputed event that we are going to have. Sir, this is one of the most historic events that India is ever going to witness in 500 years. One of the most beautiful events. And let me tell you, as far as their definition of secularism is concerned, they have the most skewed definition of secularism. For them, definition of secularism is Hinduon ke liye gali aur Islamists ke liye tali. This is what is their definition of secularism. And let me tell you, as far as this Congress party, the OACs are concerned, we had opposition to the Hindus back then, 500 years ago. The name of the chief opposition member was Babar. He had a dagger.
The only problem now is the opposition members are the Minos and the Oasis. They don't have the dagger, but well, yes, sans the dagger, they have more poison than the Baburs. And well, yes, today I want to enjoy when these people are being defamed nationally and the country is watching them. We'll all watch the historic event. Kahi Pujan to Kahi Sujan. Well, let me open up the debate and let me get in Tehseen Poonawalla. And Tehseen Poonawalla, I want to ask you, what's disputed about this event? For 135 years, the legal issue has been going on in various courts. Now the Supreme Court has settled the verdict. And you know what the Congress comes out and says? What about Mr. Ranjan Gogoi? What are you alluding to, Mr. Tehseen Poonawalla? A couple of things, ma'am. I heard my friend Dr. Patra speak, and he said he wanted the sadistic pleasure of hearing people oppose this. Now, you know the difference between BJP, Dr. Patra, and my Lord Ram was, even when Lord Ram killed his enemy Ravan, he did not burst out into celebrations. He sent Lakshman to gain knowledge from Ravan, and he atoned for killing Ravan. That was why Ram was the greatest. That is why Ram Rajya was considered so great, unlike Modi Rajya or Jumla Rajya, where 80% of the people today suffering are our Hindu brothers, where unemployment, as Dr. Varshney rightly said, and COVID is at its highest in the country, and Modi ji came on time and live. But that's not a debate. Now to the second and the more pertinent point. Ma'am, is it not a fact that the Honorable Supreme Court said in its judgment that what happened at that disputed site, and sent Kalyan Singh to jail, who's today a governor, was unfortunate, that was a functioning mosque, and that it shouldn't have been demolished. This after the BJP Chief Minister gave an affidavit to the Honorable Supreme Court that structure would not be demolished. Now that there's a Supreme Court judgment, yes, the temple should be built. We are all in favor of it. But the fact that there is going to be a celebration where the Supreme Court said it shouldn't have happened just shows the sadistic pleasure that the BJP and Dr. Patra rightly spoken issue are getting, and that is something I think this country regrets. And that is why Modi will never give Ram Rajya, because he lied. Every statement of the Prime Minister lies, and I wish we called out the Prime Minister for the blatant lies that he speaks. Thank you, ma'am. Well, Tehseen Poonawalla, for 55 years, the Congress has also been in power. Did we get Ram Rajya, then Shehzad Poonawalla, जो अब ये राम राज्य को रो रहे हैं और ये कह रहे हैं सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? ईद की सेलिब्रेशन होनी चाहिए कोविड के कोविड के दौरान, और उसके लिए रिलैक्सेशंस हो तो शरद पवार will sit in the meeting and he will call a meeting and demand this from the chief minister. Mr. Uddhav Thackeray, who says he was one of the main ones and his party was one of the main people who went in and helped in fighting for the Ram Mandir. Today he says it should be a virtual and e-Bhumi Pujan that should be held, only because they want to woo a certain vote bank. नाविका, आज तो मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा दिन है कि जो लोग कल तक राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, वो आज राम के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हैं. तो देखिए कितना बड़ा ट्रांजिशन है फ्रॉम रोम भक्ति टू राम भक्ति. और संबित पात्रा ने अधूरी बात कही. संबित पात्रा ने कहा कि कहीं पर पूजन और कहीं पर सूजन. नहीं संबित पात्रा जी, पूरा कीजिए इसको. राम मंदिर का भूमि पूजन, रोम भक्तों में सियासी सूजन, क्योंकि उनके मन में है बड़ा कंफ्यूजन. जब दिखे मदर टेरेसा हज और पोप ऑन दूरदर्शन, तब कोई सियासी उलझन इन सेक्युलरिज्म. बट जब राम लल्ला का भूमि पूजन ऑन दूरदर्शन, तो उनको लगता है कम्युनल फ्यूजन. ये है इसलिए इनका सियासी सूजन. और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, द ओनली ग्राउंड्स ऑन विच प्रसार भारती शुड नॉट शो राम लल्ला का भूमि पूजन इज दैट इट इज अगेंस्ट द नेशनल इंटीग्रेशन एंड यूनिटी. तो नाउ आर यू टेलिंग मी मिस्टर सियासी सूजन तहसीन पूनावाला कि राम लल्ला का भूमि पूजन दिखाया जाएगा तो वो नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ है? आप तो राम जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं ना. दरअसल मैं आपको बताता हूं नाविका जी बात क्या है. ये एक तरफ तो करेंगे नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, अभी हुआ नहीं है. क्षमता रखिए, जैसे लद्दाख के एमपी ने बोला ना, क्षमता रखिए सुनने की, क्षमता रखिए. अब क्षमता रखिए और सुनिए. एक तरफ तो कोर्ट पे पहनेंगे जनेऊ
उधारी और करेंगे ये राम विरोध का, इनका राम विरोध जारी। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि भाई जब आप रामायण दिखाए तब सेक्युलर था, जब आपने छाती ठोक ठोक के कहा कि हमने दरवाजा खुलवाया, हमने ताला खुलवाया, तब आप सेक्युलर थे। आज दूरदर्शन पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो ये कॉम्युनल हो गया। 2002 में हज का प्रसारण हुआ तो किसी ने लेटर नहीं लिखा, ओ ये क्यों दिखा रहे हैं हज का प्रोग्राम, क्यों दिखा रहे, किसी ने नहीं लेटर लिखा, तब सब ठीक था। जब मदर टेरेसा का प्रोग्राम दिखा तब भी सब ठीक था, पोप को दिखाया तब भी सब ठीक था। हाँ, पर अब राम जी को दिखाएंगे तो ये इनके ऊपर प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जब तक नहीं करेंगे हिंदू आस्था पे चोट, तब तक कैसे लेंगे मुस्लिम वोट बैंक का वोट? I'll just be very brief. You know, when Ram was building the Ram Setu, a squirrel came to Ram and said, you know, I want to participate in the monkeys and bears, walk the squirrel. Ram tackled the squirrel and made it. Ram was inclusive. Please don't interrupt me. But you said Ram is a mythical. But you said Ram is a mythical. There is no Ram Setu. Today you are telling that Ram के पास squirrel आई. Who was mythical? You are mythical. Squirrel is mythical और Ram is mythical. Dr. Patra, ये तो confuse हो गए हैं. अब ये confuse हो गए हैं. राम के द्वार जाएं के हज पे जाएं, समझ नहीं आ रहा है. Are you not going to let me answer? I'm going to finish. Dr. Patra, 30 seconds. I'll be very quick, Tehseen, and I think Tehseen will allow me just only a few seconds since Navika has asked me, and then I'll allow the floor to you. Dr. Patra, 10 seconds. Just 10 seconds. First and foremost, I'm astonished. Dr. Patra, 10 seconds. You want 10 seconds? Let him complete for 10 seconds. 10 seconds. Pandit Nehru built the Somnath temple with Gadgil. Pandit Nehru built it. He never went there. He never created any. And Pandit Nehru at that time told the president, don't go to Somnath temple because we can't do display of. And the president still went because the president said secularism does not mean being an atheist. Secularism does not mean being an atheist. And MC Abbas, I want to ask you. This is not about a victory. This is not about a victory. Navika, if you allow me. Okay, Dr. Patra. Minus it from my 15 lakhs. Yeah. Dr. Patra. Thank you. Just a second, please. Tehseen, you had a couple of points. First and foremost, you said that we should not celebrate the historic event. Astonishing. Navika, you should have opened your archives and you should have brought that video today. Ma Bete celebrated getting a bail in the Patiala court in the National Herald case. Band Baja Barat ke saath gaye the ye bail lene ke liye. I want each of you who are on the social media, who are in the social media platform, Twitter, Facebook, etc. Please come up with the video. Band Baja Barat leke Ma Bete gaye the ye bail lane ke liye. 5,000 रुपए में 500 करोड़ का बेल मिला था उनको घपले के केस में, नेशनल हेराल्ड में. And they don't want Hindus to celebrate Ram temple issue. This is a historic case for us. Secondly, you had this Romila Thapar influencing you, Tehseen, when you said that Ram went for atonement. Romila Thapar, who says that Yudhishthira was influenced as far as renunciation is concerned by Ashoka the Great. Just imagine. So all these Romila Thapars, my question is, would Sonia Gandhi go to Ayodhya for atonement? Because she was the one who said that Ram does not exist. She was the one who said that Ram is mythical. She was the one who said that Ram kalpanik hai. Will she and her son, the squirrel, but suddenly Rahul Gandhi wants to become squirrel? Will she and the squirrel go to the temple in Ayodhya and atone? And as far as the squirrel is concerned, where is the squirrel nowadays? I'll tell you, Navika. इस squirrel ने 1 घंटे का एक वीडियो बनाया है. 1 घंटे का वीडियो बना के रोज 1.5 मिनट रिलीज करके. स्क्विरल देश में नहीं है, स्क्विरल देश से बाहर गया हुआ है. मैं बताता हूं, कल खुलासा होगा. वेट, कल ब्रेकिंग न्यूज होने वाला है. स्क्विरल देश से बाहर है. 1-2 घंटे का वीडियो बना के रोज 1.5 मिनट वीडियो रिलीज करता है. इतना स्क्विरल बनना था तो राम जी के शरण में जाना था ना. शुरू में तो राम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कोट के ऊपर जनेऊ पहन के राम भक्त बन रहे थे. फिर कहा हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है. ये सब कहने के बाद अब हम स्क्विरल बनेंगे. हाँ, पहले ढूंढो स्क्विरल कहाँ है, फिर स्क्विरल बनना. MC Abbas, I want to ask you, why should this event not be celebrated? Why should it not be broadcast? Because Hindus have waited for 500 years and only through
route, have they won the case? And the mandir is being built as per the specifications and the milestones set by the Supreme Court. Where is the problem in all of this? Because we've cited all the precedents that exist. Hajj has been telecast, Jain functions have been telecast, Christian functions, and I can tell you, Catholics focus on December 12, 2019, India's national channel Doordarshan broadcast live events on Christmas, including the Mass of the Vatican and the message of Pope Francis. This was carried between 8:30 a.m. to 10 p.m. in Vatican, and it was telecast here in India between 1:55 a.m. to 4 p.m. Indian time. Why did nobody have a problem then, sir? Bilkul Navika ji, I was watching the 18th show of Mr. Ramesh Chandal, and I did see, of course, Mother Teresa, Pope John Paul II, so on and so forth. You're very well known journalist with over 3 decades of experience. On one point, I'm sure you will agree with me. And the point is, here there is politics being played out. If Congress is being to be minority appeasement, there is also another party which is an expert coming to the majority appeasement. One more point, I'm a big fan of Dr. Sambit Patra. Let me announce that today, but not to office spokesperson, but his stand-up comedy. सर राम भव्य राम मंदिर में हम मुसलमानों का दिल जलता नहीं खुश होता है हम खुद आदर सम्मान करते हैं जो भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है not able to get him his voice is not clear I didn't interrupt anybody don't interrupt me हम खुद आएंगे और सम्मान करेंगे अयोध्या में पहुंच के लेकिन क्या आप मुझे एक बताइए 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं क्या जय श्री राम भगवान श्री राम खुश होंगे अगर राम वक्त मर रहे हैं हॉस्पिटल नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है वेंटिलेटर नहीं है क्या ये समय है खुद राम आज निराश होंगे खुद उनको बहुत दुख होगा कि मेरा राम अब्बास साहब आपकी फिक्र जायज है कि कोविड के टाइम में किसी को कोविड हो सकता है तो वो तो ईद के समय भी हो सकता है तो ईद में क्यों रिलैक्सेशंस चाहिए विनोद बंसल जी यू नो आर दीज डिफरेंट काइंड ऑफ कंपैरिजंस दैट आर मेड हिंदुओं को कोविड हो जाएगा बाकी धर्मों को कोविड नहीं होता है क्या हिंदू सेलिब्रेट करेंगे तो उनको कुछ हो जाएगा ये कहां का जस्टिफिकेशन है नाविका जी देखिए आपकी डिबेट में जो पॉलिटिकल डिस्कशन हो रहा है मैं उससे इतर कहीं दूसरी जगह जाना चाहता हूं देखिए आपको याद होगा कि जब ये खुदाई का काम चल रहा था तो उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट थे के मोहम्मद व्हाट ही सेड एट दैट टाइम दैट कि अगर मान लो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी लॉबी इसमें टांग नहीं अड़ाती तो राम मंदिर कभी का बन गया होता और ये जो है ये नहीं चाहते कि देश की भावनाओं का सम्मान हो ये नहीं चाहते कि देश की न्याय व्यवस्था का सम्मान हो ये नहीं चाहते कि देश की सांस्कृतिक मर्यादा का सम्मान हो ये नहीं चाहते कि देश के जो विदेशी आक्रांताओं के साथ जो लोगों को जुड़ाव है उसको खत्म किया जाए और ये नहीं चाहते कि जो राम राज्य की पुनर्स्थापना हो ये चाहते हैं कि संविधान के प्रथम प्रश्न से भगवान श्री राम का जो राम दरबार का चित्र है उसको भी फाड़ दिया जाए ये चाहते हैं कि वो जो महात्मा गांधी की जो समाधि है उस पर जो हे राम लिखा हुआ है उसको भी अबॉलिश कर दिया जाए उसको भी डिलीट कर दिया जाए ये नहीं चाहते कि किसी तरह से जो लोग हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षाओं से प्रेरणा लें ये नहीं चाहते कि किसी तरह से देश में जो एकात्मता का जो माहौल बन रहा है जिस तरह से संपूर्ण देश एक हो रहा है संपूर्ण देश की पवित्र नदियां पवित्र जल पवित्र मिट्टी और जो विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के लोग जो एकत्र होकर के वहां पर जो पूजन करेंगे और देश की एकात्मता का जो संदेश देंगे और जो राष्ट्रीय स्वाभिमान का जो पुनर्जागरण होगा राष्ट्रीय संस्कृति का जो पुनर्जागरण होगा वो हो दे डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स और देखिए ये शुरू से ही जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के नेहरू जी ने जो बीजारोपण किया था उसी का फल ही काट रहे हैं आज जो बटवृक्ष उसने खड़ा किया उसी के कारण ये सैन्यम चाहे मायनों की बात हो या राहुल की बात हो पोप जॉन पॉल की बात हो या किसी और क्रिश्चियन मिशनरीज की बात हो या इस्लामिक जिहादियों की बात हो ये नहीं कहेगा Shadab Chauhan, I want to ask you, in this country we have all celebrated every single festival. We have celebrated Christmas as well as we have celebrated Eid. We have celebrated Diwali with all people from different religions, and this has been the system that has existed. The Ganga Jamuni Tehzeeb is something that India is known for.
why do political parties have to intervene and disturb this social balance? Because आप आम आदमियों के घर में जाएंगे तो ये डिबेट नहीं होगी, ये चर्चा होगी ही नहीं, क्योंकि किसी को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि हज में जब लोग जाते हैं एक दूसरे को लोग विश करते हैं कि आप हज पर जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। उसी तरह अब 500 साल बाद अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा तकलीफ क्यों होती है? स्पेशली सीपीआई और सीपीएम मिलाकर 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, 5 आउट ऑफ 543। Why would they want to stop the broadcast? Why would they want to stop the broadcast? दिनेश वार्ष्णेय जी, इन्होंने ये दंगे शुरू करवाए बीजेपी नाविका जी, दो एमपी। तो आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि दो के सहारे आप दंगे करा देंगे? किया था, और जब इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई उसके बाद सीपीआई का एमपी जीता था, उसके बाद सीपीआई का एमपी जीता था अयोध्या में। इनको अयोध्या की जनता। यस, शादाब चौहान। There is no problem in celebration of any religious function or telecasting of any religious program, but there is 2 problems in Bhumi Pujan. First thing is that the Supreme Court of accept that is a criminal act. Demolition of Babri Masjid is criminal act, and this is a disputed structure, and curative petition is already pending in Supreme Court, and I don't know why Prime Minister of country visit that kind of place, and yes, national integrity is in danger. Supreme Court का unanimous decision. How is national integrity in danger? Has the Supreme Court said that the timeline that has been given by the Supreme Court should not be followed? Is there a stay on the timeline that has been given by the Supreme Court? Shehzad Poonawalla, you're a lawyer. Explain to Shadab Chauhan. नाविका जी, आप क्यूरेटिव पिटीशन नहीं, एक सेकंड शादाब चौधरी, एक सेकंड। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा सम्मान श्री राम जन्म स्थान होगा। ये सबसे बड़ा मिसाल हिंदू मुस्लिम एकता का, ये भव्य मंदिर बेमिसाल होगा। ये इनको कहिए कि क्या इंडोनेशिया मुस्लिम बाहुल मुल्क है, वहां पर श्री राम का आदर होता है। थाईलैंड में राजा का नाम श्री रामा के नाम पर है, उनकी करेंसी नोट से लेकर हर जगह पर राष्ट्रीय चिन्हों पर श्री राम मौजूद है। और भारत एक लौता ऐसा वर्ष है जिसके 130 करोड़ के सांस्कृतिक आइकॉन है श्री राम, पर उनको कटघरे में दिन रात खड़ा करने का काम दिनेश वार्ष्णेय और शादाब चौधरी करते हैं। अरे दिनेश वार्ष्णेय जी, आपके नेपाली ओली जो है ना, नेपाली ओली, वो भी कहते हैं श्री राम हमारे देश में पैदा हुए। वो कम्युनिस्ट भी श्री राम के पीछे भाग रहे हैं, और आप जैसे लोग श्री राम को रोज गाली देते हैं। आप जैसे लोग रावण भक्त है, रोम भक्त है, और आप ही के कारण देश में यह हिंदू मुस्लिम विवाद बना हुआ है। पर 70 साल का विवाद अब हुआ समाप्त, और इसीलिए इनकी दुकान बंद हुई है, इसलिए इनके पेट में है सूजन, और इसलिए ये कर रहे हैं भूमि पूजन का विरोध। पेट्रोल डीजल पे तुम लूट रहे हो देश की जनता को। One at a time, Mr. Dinesh Varshney, what is your problem? What is your अस्तित्व? आप आस्था की बात कर रहे हैं, अस्तित्व क्या है आपका? पांच आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और 2 सीपीआई के, 3 सीपीएम के। हम पूरे देश 1% पूरे देश में मौजूद हैं। पूरे देश में अभी भी बीजेपी भी मौजूद नहीं है, पर हम पूरे देश में मौजूद हैं, हर जिले में। सर, पूरे देश में से चुन के कितने आते हैं? लोगों के दिमाग में जहर क्यों भरना चाहते हैं? ये अफजल गुरु की बरसी मनाएंगे, ये बुरहान वानी को बच्चा बोलेंगे, ये रियाज नाइक को मैथ्स टीचर बनाएंगे, पर श्री राम के नाम पर कुछ काम हो तो इलेक्शन गिनाएंगे। क्योंकि हम इनके ऊपर विचारधारात्मक चोट मारते हैं, हम इनके ऊपर एक आइडियोलॉजिकल चोट मारते हैं, जिसका ये जवाब नहीं दे पाते। आज ये जवाब नहीं दे पा रहे कि कोविड-19 में क्या बात है। सर, लखनऊ में पेशेंट जेएनयू की कैंटीन गाजियाबाद में पेशेंट भटक रहा है, आप आइडियोलॉजिकल चोट मारते रहिए, पर आप जेएनयू तक सीमित हो क्या कारण है ये?
आपका फेलियर है। नोटबंदी में देश की जनता का जेब खाली, बनता से पैसा ले लो, चंदा ले लो, भूमि पूजन के प्रदर्शन का। नोटबंदी और राम मंदिर में, नोटबंदी और राम मंदिर में कनेक्शन क्या है मुझे तो समझ नहीं आया, और मेरे को लगता है दर्शकों को, व्यूअर्स को भी नहीं समझ आया होगा। बट डॉक्टर पात्रा, I want to come back to the moot point, and the moot point is they say that the celebration does not augur well because there is another criminal case where the Supreme Court has said that the demolition of the Babri Masjid was not correct and it was a criminal act, and therefore there should be no celebration of the Bhumi Pujan. Respond to that particular point that has been raised. See, Navika, first and foremost, let me remind you of the fact that some of the agents of these people, they had gone to the court with a PIL that in fact the Bhumi Pujan should be stopped. The court threw it into the dustbin, so the court has answered them. Now let me tell you, certain debates are not debatable, certain issues are not debatable. Ram Temple, Bhumi Pujan should be there or should not be held. These are issues which are not debatable, and I firmly believe that you, me, Sahjad or anyone, none of us should lose our cool today. Today we should enjoy these people in fact losing out. I mean, look at their frustration. Can you imagine their frustration? ये जो बैठे हैं यहाँ पे CPI, कार्ल मार्क्स जो बैठे हुए हैं, क्या हो रहा होगा, इनका दिल जल गया होगा। ये सब दिल जले हैं, दिल जलों का दिल जल रहा है। इतना हम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। Watch them and forgive them. The people of this country have been watching them since years, and the people of this country have punished them. What is the Congress party today? Just imagine, the Congress party has reduced itself into a non-existent party today. What is the CPIM today? The CPIM today does not even have a single member of parliament today. The reason is because of this selectivism, this selective secularism of theirs. So for God's sake, मैं इतना ही कहूँगा, अरे आप लोग कहीं पूजन कहीं सूजन, इनकी सूजन हुई है, मलहम लगाइए, मलहम थोड़ा सा ठीक होगा, मलहम नहीं है तो बोलिए हम मलहम भी भेजेंगे, इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ तो पूजा होगा ही, प्रधानमंत्री जी पूजा करेंगे, हम सब भी अपने घरों में कोरोना के कायदे कानून मानते हुए दिवाली भी मनाएंगे, दिए भी जलाएंगे और भगवान की पूजा भी करेंगे। आप लोग रोते रहिए, बहुत रोइए, पूरा बाल्टी भर भर के रोइए। आई रिमेंबर, रोने से याद आया, वो 3 आतंकवादी मर गए थे, सोनिया गांधी कितना रोई थी बाटला हाउस में, याद है ना वो 3 आतंकवादी, when three terrorists were killed in Batla House, Sonia Gandhi could not sleep for 3 nights, she kept on crying। आज भी रोएंगी सोनिया जी, जब मंदिर पर पूजन होगा सोनिया जी बहुत रोएंगी, रोइए, आप सब रोइए, हम मजे लेंगे। तहसीन पूनावाला, when Adhir Ranjan Chaudhary raises the issue of Ranjan Gogoi, Chief Justice of India, when this judgment came in, should be invited. What is the point that the Congress wants to make? Are you questioning the legal process? Are you questioning the judgment? Are you raising questions on the judges? Because Mr. Ranjan Gogoi was not alone on that bench. There were many other judges as well. I want to ask you, what is it that the Congress party is insinuating, and why should they insinuate it at this point in time? Only because their politically irrelevant party is now not finding any other issue? So I'll quickly reply to that. Of the 5 honorable Supreme Court judges who delivered this verdict, 4 are still serving on the honorable Supreme Court. One has retired, apparently, and he's been nominated to the Rajya Sabha by the BJP government on the aid and the president on the aid and advice of Prime Minister Modi's cabinet. So since he is now no longer serving in parliament, in the judiciary, why not invite him? But I want to make a point to Dr. Patra, if you can be precise. It's as innocent as that? It's as innocent as that? So, and I have a question. No, don't run away. When you name a former Chief Justice of India, then you should have the gall to come out and say, why are you saying this? Why do you not have the conviction to state why you made this statement? Why is the Congress raising his name? I'm telling you with conviction. With due respect to the majesty of the Honorable Supreme Court,
In my opinion, Dr. Gogoi, accepting that Rajya Sabha was wrong, but he's done it. He should now go. I have a question for Shehzad or Dr. Patra. Will the Honorable Prime Minister go for the foundation link stone of the mosque when it will be built? And will that, please can you stop interrupting and stop being a nuisance? Okay. Will the Honorable Prime Minister go for the foundation link stone of the mosque when it will be laid? When the land is allotted, and will that be telecasted on Prasar Bharati, or will be a one-sided? Answer this question precisely. Shehzad Poonawalla. एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड नाविका इनसे पूछेगा जरा, एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड में जवाब दे दूं इनका। नाविका इनसे पूछेगा बहारुल इस्लाम कौन थे, रंगनाथ मिश्रा कौन थे? ये तो वो लोग थे जिनको कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी जज बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो यहां पर आकर बताया नहीं किसी को कि क्या प्रोप्राइटी है, पहली बात। दूसरी बात, वो तो नॉमिनेटेड ये जो वामपंथी और एक बार जजमेंट देने के बाद उनको एमपी बनाया, फिर एमपी के बाद फिर से चीफ जस्टिस बनाया, ये खेल चलता रहा। तो इसके बारे में तो पहले तो किसी को सिखावन ना दे कांग्रेस पार्टी के लोग। और वार्ष्णेय जी से सिर्फ इतना कहूंगा, वार्ष्णेय जी राम के प्रति इतना नफरत रखोगे तो हो सकता है कि सीताराम येचुरी का नाम आप सीता बीप येचुरी कर देंगे। संविधान के पन्नों में भी श्री राम की तस्वीरें है, उसको भी फाड़ देंगे आप। इतनी नफरत मत कीजिए राम से। और जहां तक वो गिलहरी ने, मेरे भाई गिलहरी ने सवाल पूछे हैं, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री मोदी हिंदू है तो वो हिंदू रीति रिवाज का पालन करेंगे। आपके नजर में कोई मुसलमान होगा जिसने बोला है मुसलमान पार्टी है, उनको जाने दीजिए, नए मस्जिद बन रही है उसके लिए, क्योंकि वो तो राम जी के मंदिर में जाएंगे नहीं, तो उनको भेज दीजिएगा ना। जो कहते हैं हम मुस्लिम पार्टी है, उनको जाने का पूरा न्योता देंगे। उनको चाहिए तो उनके फेवरेट टीवी चैनल, जिनकी व्यूअरशिप why the Prime Minister has to give this Agni Pariksha every now and then to impress the Congress Party or the NCP or the AIMIM? Because I know that the Prime Minister had addressed the Christian community in New Delhi in 2015. He inaugurated the World Sufi Forum in New Delhi in 2016. He visited the Siddhi Saeed Mosque in Ahmedabad 2017. He also was at the Sheikh Zayed Mosque in Abu Dhabi in 2015, and he visited the bombed churches in Sri Lanka, in Colombo in 2019. So MC Abbas, आप प्राइम मिनिस्टर से क्या सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट मांगना चाहते हैं? उन्होंने सर्व धर्म को सम्मान दिया है, जो आप लोगों को देना नहीं आता है। नहीं, हमें भी आता है, उनको भी आता है, उनको बहुत अच्छी तरह से आता है। क्योंकि मैं बता दूंगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है, द प्रॉब्लम इज नॉट हिंदुइज्म और लॉर्ड श्री राम। There's the greatest of respect for a great art of living, which is Hinduism and culture. The problem is the Bharatiya Janata Party, which knows how to milk the card of religion, Hinduism, Ram Ram Japna, Parayamal Apna, Ram Ram Japna, majority vote Apna. This is wrong. Lord Shri Ram will not be happy when you want to do majority appeasement. जब चर्च गए थे, मस्जिद गए थे, कोरोना नहीं था, कोविड नहीं था, राम भक्त, अल्लाह भक्त, येसु भक्त मर नहीं रहे थे। But this is not the time, Navika ji. This is definitely not the time. And also, I'm not going to give the pleasure to Dr. Sambit Patra of smelling or sniffing of his sadistic pleasure. He can keep it within his four walls and not to national television, sir. I'm sorry. We are very happy, but this is not the time. When the time comes, we shall be there. We shall say, Labbaik. We are with you, Lord Shri Ram. Bhagwan Shri Ram, we stand with you and we shall be with you today. And Navika ji, that I tell you, which is missing in the Bharatiya Janata Party, which uses Hinduism, which uses Lord Shri Ram for their political benefit. Dr. Patra, I want to draw your attention and our viewers' attention that there is one Muslim man who is riding a bicycle from Chhattisgarh and is coming to Ayodhya. This is the man on your screens. This man is going to Ayodhya to celebrate the Bhumi Pujan. इन्हें कोई दिक्कत नहीं है. There are others who have come out and said that they will actually support this. In fact, जितने फूल वाले बैठते हैं वहां मंदिर के बाहर, वो मुसलमान हैं, वो मुसलमान फूल लाके
पिरोते हैं, माला बनाते हैं और वो माला चढ़ती है राम जी को। ये मैंने खुद किया हुआ है। और वहां पर इकबाल अंसारी जो ओरिजिनल लिटिगेंट हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। वो ही इज सेलिब्रेटिंग द फैक्ट दैट द डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड और जो जिसका था राइटफुली वो उसको मिल रहा है। पर डॉक्टर पात्रा, ये लाइसेंस होल्डर्स कौन है पॉलिटिकल पार्टीज के जिनको इस वक्त इतनी पीड़ा हो रही है? See, Navika, it's not a Hindu-Muslim issue. And the best part, and this is the integration of India, I mean, after the judgment came, did you see anyone, any fraction coming out on the streets, anyone celebrating it publicly or anyone denouncing it publicly? No. Everyone knew that as far as Ram is concerned, Lord Ram is concerned, he is India. He defines India. He cannot be in fact put into a cohort of Hindu or Muslim. That's why I would say Muslims are also celebrating. The irony is the ones who call themselves Muslim in this panel are pseudos. In fact, they are pseudo-liberals. In fact, they are selective secularists. Please don't call them as Muslims, number one. Number two, these are the very people who used to challenge us in every debate before 1 year. मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। बताओ बताओ बताओ। 5 अगस्त 2020। अब तारीख सुन लो और घर जाके आराम से 10 बजे सो जाना। 5 अगस्त, मेरे पीछे पीछे बोलो सैदाब भाई, पीछे पीछे बोलो। 5 अगस्त 2020। आप लोग पूछते थे ना शादाब चौहान, तारीख बता रहे हैं। शादाब जी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सब साथ रहे हैं इस देश में। अब सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए इस इशू को उछालना क्या सही है? बिल्कुल नाविका जी, सब साथ रहे हैं और साथ रहेंगे, लेकिन एक संत ने कहा कि ये राम मंदिर भूमि पूजन की जगह आरएसएस के मुख्यालय का भूमि पूजन नजर आता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि नेशनल इंटीग्रिटी के लिए इसलिए खतरा है कि आप एक ऐसे स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। I strongly object to this. To compare Ram temple with any organization and to belittle this debate in this way is objectionable. आरएसएस कहां से आई इसमें? विनोद बंसल जी, अगेन पॉलिटिकल अटैक। संबित पात्रा, देखिए मैं बताऊं, ये इनका काम ही एक है। इनका एक में वो उद्देश्य पॉलिटिकल अटैक करना, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। आप देखिए जितने भी राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भरसक प्रयास किए, आप देखिए अभी एक कांग्रेस के सो-कॉल्ड प्रवक्ता बोल रहे थे कि आखिरकार बहुत अच्छा है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर मैं पूछना चाहता हूं। Well, ladies and gentlemen, राम, भगवान राम is also called मर्यादा पुरुषोत्तम, Shri Ram. Maryada Purushottam is somebody who's a great man who follows the right path. Maryada में रहते हैं. He stays in his limit and teaches people to stay in their limits. And that is the ethos of Ram in this country. Well, if laws are to be seen, the INB ministry, the Prasar Bharati Act that has been quoted to question the broadcast also says that the cultural display and integrity of this country should be promoted by giving equal footage to all religions. Then why object to this Bhumi Pujan, which is a celebration for Hindus in this country after 500 years of a long wait? Is this also to be opposed? And Mr. MC Abbas, I don't want to make this political, but I want to ask you, आप कह रहे हैं कोविड के समय इंपॉर्टेंट नहीं है ये करना। मैं आपको राजस्थान की तस्वीरें दिखाती हूं जहां कोविड के समय कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, कितना फॉलो कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उनसे सीख लीजिए और फिर उंगली उठाइए किसी और पर। दैट इज वेयर वी लीव दिस स्टोरी. August 5th is the date. We hope that all people will